Okay, so only 5 students are there in this lab, or still they are coming? Am I audible? First of all, Bhavin, Udit, Om Prakash. Yes, Yes, sir. sir. Audible. Uh, might be they will came. Okay, we'll wait for a few minutes. वेट करते हैं थोड़ी देर, लोग आ जाए उस टाइम तक. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Okay, so we will start. First of all, good morning to all of you. This is I think this is a first batch in COA subject for this EC2 class, batch B. Okay, it's yes, ED1 class, batch B. This is the first class we have. Okay. Yes. So what everybody need to do first of all, like there is a Canvas joining link I have given in the chat box. Okay. So what you need to do, you need to enroll for that course by using that particular link. And for that, I need to require that somebody will share their screen and they will show that how they are setting the canvas and all stuff. So who is going to take this responsibility? इसके पास लैपटॉप है या मोबाइल है जो अभी ये लिंक से कोर्स अगर ज्वाइन कर रहा है तो आपको यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करके अभी डेमो दिखाना पड़ेगा so that all the student can get the reference from that. So who is going to take this responsibility? Hello. Yes, sir. Yes, Bhavin, share your screen and just join with that link. Okay, after sharing your screen, so सबको पता चले कि किस तरह से join होना है. और मैं उसमें कुछ instruction भी दूंगा. I will give some instruction. According to that, you need to save your display name, and then your canvas is going to be set up. Okay, sir. Yeah, you can share your screen. Bhavin, yes? Okay, okay. Yes, share your screen, please. Okay, Bhavin has shared the screen from the mobile. Let we will see. Visible, sir? Yes, it is visible. Okay. So go to that chat. No, in the chat only. I have given the link over there. Have you copied that? Yeah. Yeah. So this is the first. It's a canvas.instruction, that link. Yes. You just need to click on that. Yeah. So I think all of you have already the Canvas account is there. So you need to create, like I have already a Canvas account. Okay. Likewise, already has a free for teacher login. Okay. So you just need to enter your password. Okay, with your previous Canvas account. So already आपके पास वो account था ही, आपको सिर्फ password enter करना है. Then you need to enroll in the course. Then automatically, not now, go to dashboard. Not now. Okay, done. Okay, go to the course. Go to the course. Yes, COA. Okay. So this is a course. It's already joined, and there are experiment number 1, which is visible to all of you. Okay. Now, Bhavin, can you go to the settings from your account? okay, Go to settings. Everybody, please see that you need to go to the settings. Okay, I'm going to send this link again. Wait for a while. So those who have joined the new,
Not that drive link. Udit Raj, wait for a while. I'm going to share the canvas link. Yes. So what you need to do, change. You need to change your display name. Okay, display name with your enrollment number. Okay. Go to the go down, Bhavin, go down. What is your enrollment number, Bhavin? 200 1 601. 200. Okay. So according to that, you have already set your name. So everybody Yes, check that. Already Bhavin has set their name as your enrollment number first, then underscore, then their full names. Okay. So likewise, all of you need to set your display name also like that one. Bhavin, go down. There are settings, but setting link is going to be there. Go down. Go down. Yes, there are edit settings. Yes. So everybody, if you have not changed that particular stuff, you need to go to edit setting. Instead of full name, also you write the same thing. Like first your enrollment number, then your name. Bhavin, like that. First enrollment number, then your name. So everybody need to change this stuff, okay, in your display setting, like first your complete enrollment number, then underscore, then name. Likewise, everybody need to change their full name, display name, and sortable name, so I can better identify that entire stuff and then that your account and all the things. Okay. Is it okay with everyone now? If it is done and if you have not any question, Bhavin, let me share my screen and I will show that how many of you have just joined this canvas and how many of you have just created the account or not. Okay, so let me share my screen and I'm going to share show you that how many of you have already registered. So everybody, those who are in the lab right now, join with the canvas. Okay, and give me the confirmation in the chat box after your canvas has been set up. So this process will be completed easily. Everybody go to their this link and go to that canvas portal and let me just go to the peoples and likewise majority of the student has changed their name and all stuff. So now let me make a group. So this is a ED1 class. So group name VS. So this is a Vishal Soratia. Hello sir. Yes, Hello. please. Yes, please. सर एक बार फ्री से लिंक भेजो ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ. ओके हो गया. ओके जस्ट देखिए फिर से मैंने लिंक भेजा है चैट बॉक्स में. ओके चलिए देखिए. और एक बार ज्वाइन हो जाए तो बाद में सब लोग मुझे यहाँ पे अपना 1 by 1 नंबर बताएंगे. मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ. इट्स नेम इज ED. Its classes. Let me take ED1. ED1 class. I think this is a stuff we have. ED1. Okay. For ED1. It's not any limit. Yeah. So अभी मुझे सब लोग 1 by 1 अपना अगर कैनवास अकाउंट सेटअप हो गया है तो अपना एनरोलमेंट नंबर बताएंगे तो मैं आपको वो ग्रुप में यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा. ठीक है. Everybody, please set me, give me the name of that particular name or enrollment number so I can add them in this particular group. चलिए बताते चाहिए अपना 1 by 1 नेम या एनरोलमेंट नंबर. आप ही स्टार्ट कर दीजिए. क्या नाम था अभी माइक ओपन करके बताइए. चलिए बेटर यू ओपन योर माइक एंड टेल मी. हेलो. 6039. 6039. Udit Raj, is it okay? Okay, so Udit Yes, Raj sir. is, yes. Next one. 601. 6033. 603. 6033. I think you have not created the canvas till now, or your display name something different. हेलो सर. हाँ बोलिए. 6011. 6011. चलिए 6011 नेहा added. Next one. 6002. 6002. चलो 6002 words has been added. चलिए 6001. 6001. चलिए Bhavin has added. Yes, next one. 6005.
6005 6005 आपका कैनवास अब तक नहीं सेटअप हुआ, सेटअप कीजिए। 6009 6009 मिहिर आपका एनामेड हो गया। चलिए नेक्स्ट 6004 6032 6004 यस ओके चलिए 6004 हो गया। चलिए और 600 6010 सर। एक मिनट एनरोलमेंट नंबर वाइज बोलते जाइए स्टार्टिंग से। चलिए D2D सर रोल नंबर आया है 6010 ना 6010 चलिए मनन परमार ठीक है। चलिए 6008 6008 आपका कैनवास नहीं अब तक सेटअप हुआ, ट्राई करिए फिर से। 6032 6032 अभी तक कैनवास नहीं हुआ है। सर राइट माय नेम सर नेम मे बी इट इज लाइक बोलिए, नाम बोलिए। Paul Amrelia यस यस ओके ओके पाल अमरेलिया। इस तरह से अपना सेटिंग्स में नाम चेंज कर दीजिए, पहले एनरोलमेंट नंबर बाद में नेम। चलिए अभी ठीक है। ओके ओके चलिए बाद में मेरे को बताइए, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। चलिए who's there? 8 student has been added. Everybody please give me the name. Open your mic and tell me the name. If your name is not listed in right hand side, यहाँ पे right hand side में आपका नाम नहीं है तो अपना एनरोलमेंट नंबर या नाम बताइए। चलिए कैनवास सेटअप हो जाने के बाद। हेलो पंकज कुमार, चलिए सर्च करते हैं। पंकज कुमार माइक ओपन करके बताइए भाई। ओके सर। हाँ पंकज कुमार इस तरह से नाम अपना चेंज कीजिए जो मैंने अभी बताया। फर्स्ट आपका एनरोलमेंट नंबर और बाद में आपका नाम, ठीक है। इस तरह से अपना सेटिंग्स में जाके नाम चेंज करिए और बाद में मुझे कंफर्मेशन दीजिए। चलिए क्विकली दूसरा लोग बताइए। चलिए अपना नाम बताइए यहाँ पे अगर नहीं है तो क्विकली। ओम प्रकाश ओम प्रकाश आपका अभी तक नहीं कैनवास सेटअप हुआ शायद। सर हो गया सर। हो गया। चलिए मैं फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ अगर D1 ओम प्रकाश नहीं है। अपना एनरोलमेंट नंबर बोलिए। चलिए क्या है? सर 190570 190570 या चलिए हो गया। 6031 ओके। यस सर। चलिए और बताइए। चलिए 10 स्टूडेंट हैज बीन एडेड। व्हाट अबाउट द अदर? Om Prakash has been done. Wait, Arman Ali is going to edit. Khushbu Ladani 6005. Pankaj Kumar. Okay, Pankaj Kumar, you have changed that your display name. Pankaj Kumar, let me see. पंकज कुमार रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दोनों जगह पे डिस्प्ले नेम में चेंज करिएगा पंकज कुमार, तभी जाके होगा। सिर्फ वो मेन नेम में नहीं, डिस्प्ले नेम में भी सब जगह पे इस तरह से लिख दीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक एनरोलमेंट नंबर एंड नेम। 3 बॉक्स हो गए, तीनों बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए सब लोग देखिए यहाँ पे जो अभी नाम चेंज कर रहे हैं वहां पे प्रोफाइल में जाके बाद में आपको और सेटिंग्स में जाके आपको एडिट सेटिंग में जाना है और ये तीनों जगह पे फुल नेम, डिस्प्ले नेम, सोर्टेबल नेम में आपको क्या लिखना है? अपना एनरोलमेंट नंबर 91700 जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है 00526 जो भी है, देन अंडरस्कोर एंड देन नेम। लाइकवाइज आपको ये तीनों जगह पे लिखना है, डिस्प्ले नेम में भी, फुल नेम में भी, और like this is my enrollment number, so that's in all the 3 field you need to write like this one, so it's going to be updated over here. Okay, ऐसा लिखिए सब लोग और बाद में मुझे बताइए। चलिए कौन बाकी है अभी ऐड होने में? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव इन एंटायर क्लास? वी हैव 16 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, अरमान अली हैज remaining. Wait Arman, let me add you in that portal. Peoples, okay, VS group. अरमान अली अभी तक चेंज नहीं किया आपने, वो डिस्प्ले नेम चेंज करिए। चलिए ओके। पंकज कुमार आपका भी बाकी है, बाकी सबका हो गया। आनंद परमार सब लोग रेडी। ओके, who is remaining? Only 11 student is there in this list. Who is remaining?
नाम बताइए, एनरोलमेंट नंबर बताइए, माइक ओपन करके चलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए, टू हार्दिक बोलो। डबल जीरो 111। एक है, जस्ट सेकंड ना, 4 डिजिट लास्ट बोलिए अपना। 6007। चलिए 6007 हार्दिक, डन। चलो 12 स्टूडेंट हो गए। नाउ हाउ मेनी आर रिमेनिंग? एनीबॉडी रिमेनिंग? चेक योर नेम ओवर हियर इन दिस स्क्रीन। In this screen, check your name. If your name is not over here, tell me to add the name. पहले अपना कैनवास सेटअप कीजिए, जो लिंक दी गई है, बाद में यहाँ पे नाम ऐड करने को आपको करना पड़ेगा। चलिए सब लोग सर बोलिए। 6025 6025। अभी तक कैनवास नहीं सेटअप हुआ, नाम बोलिए अपना। अरमान अली। अरमान यहाँ पे है ना आपका नाम, देखिए ना, अरमान अली। देखिए ये ऑलरेडी नाम है आपका। यस सर। तो वो अपना वो सेटिंग्स में जाके वो सब चेंज कीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर और नेम वाइज। समझ गए आप या नहीं? यस सर, कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलिए। और कोई बाकी है अभी यहाँ पे? यस नो? सर मेरे में डिस्प्ले नेम नहीं शो कर रहा है सर, ओनली फॉर नेम शो कर रहा है। उसके तुरंत नीचे ही होगा डिस्प्ले नेम। आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। चलिए ओके सर। सर दिस इज हियर सर। ए जस्ट सेकंड। हाँ तो एक 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 मिनट में एक ये ऐड कर देता हूँ, जो कुछ लोग बाकी थे उसको। हाँ बताइए, चलिए जाइए कैनवास में अपने। सर आगे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पंकज कुमार पासवान। वेट 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 वेट, एक मिनट। हाँ ओके, पंकज कुमार, एक मिनट चेक करके बताता हूँ आपका। ओके ओके, जाइए अपने कैनवास में जाइए। यहाँ पे मुझे सिर्फ वही नाम दिखा रहा है, आपका मेल आईडी वाला। कैनवास में जाइए, अकाउंट्स में जाइए, सेटिंग्स, गो टू सेटिंग्स। नॉट इन प्रोफाइल, गो टू सेटिंग्स, अकाउंट और उसमें सेटिंग्स। हाँ नीचे नीचे जाइए, नीचे जाइए। शो कर रहा है सर। गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन, डाउन 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 डाउन, गो डाउन 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 डाउन। एडिट सेटिंग, देखिए एडिट सेटिंग पे क्लिक कीजिए। चलिए सब जगह पे वो डिस्प्ले नेम वाला है ना, वो कॉपी करके फुल नेम में भी लिख दीजिए, सोर्टेबल नेम में भी लिख दीजिए। चलिए ओके सर। पेस्ट। ओके, डन सर। फुल नेम में भी लग दीजिए, फुल नेम में भी ऊपर, फुल नेम में भी। ओके, अभी सेव कर दीजिए। चलिए डन सर। डन 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 पंकज, अभी ठीक है। चलिए अभी हो गया सबका, ठीक है। सो ऑलरेडी देयर इज अ 12 स्टूडेंट्स आर देयर। सर मेरा बाकी। सर हाँ मेरा बोलिए बाकी। ना, नाम बोलिए। प्रशांत आकविया। PRA SHANT। प्रशांत, आपका तो नाम अभी ज्वाइन हुए आप? हाँ अभी ज्वाइन हुआ। चलिए वो डिस्प्ले नेम वो जो मैंने अभी सेट करवाया वो चेक वो करिए। कर लिया सर। कर लिया? हाँ रुकिए सर। तो, रुकिए एक मिनट। हाँ प्रशांत आकविया, ठीक है। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
Prasant. Okay, Prasant, we are moving from this one. Okay, done. Chaliye, okay. Thank you, sir. So already 13 students are there. Now we will start with another process. मैंने जो आपको एक ड्राइव में लिंक दी हुई है, ठीक है? सो आपको, हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। सर मेरा चेक करिए। यस, हाँ, मैंने हेलो, कर दिया है। अरमान, यस सर। आपका नाम, आई फॉरगॉट वन। मनन, आप क्या फॉरगॉट, उसमें क्या हो गया दिक्कत? अरमान, लेट मी चेक आपका नाम है या नहीं in group. Let me share my screen so everybody can see that process, your entire screen. Okay, ठीक है। ओके, सो आप फिर से चेंज कर दीजिए ना, उसमें क्या है मनन, अभी तो आप चेंज कर सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकाउंट में जाके चेंज कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जिन लोगों के नाम है। अरमान, अरमान अली इज दिस इज नेम इज ऑलरेडी देयर। ओके, आपका हो गया ग्रुप में, देखिए, ठीक है? मनन, अगर है कुछ वन आप भूल गए हो तो फिर से जाके वो प्रोफाइल में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, डन। इज दैट ओके? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी ऑन दिस वन? हेलो, नो वन? ओके, चलिए। सो मैंने एक और आपको ड्राइव का लिंक यहाँ पे शेयर किया था, जो अभी लोग नए हैं मैं फिर से शेयर कर देता हूँ वो ड्राइव का लिंक। आपको क्या करना है, देखिए, सो यू नीड टू गो टू द ड्राइव लिंक, और ड्राइव लिंक में जाके आपको ये दोनों जो सेटअप फाइल है वो आपको इंस्टॉल करनी है, आपको डाउनलोड करनी है पहले, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद, like after getting the download, you need to simply just install that, and there are the next type of the simple setup processes there. So you need to just do the setup of this, any of this one. Like if you install the 1.41 or 1.37, whatever it is there. Okay, so दोनों में से कोई भी एक चूज करके आपको एक कोई भी सॉफ्टवेयर इन दोनों में से आपको इंस्टॉल करना है। Okay, so can anybody download and share his or her screen and show us that whether it is working or not? So मैं उसी में से आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, so it would be a better to understand at the point of the student per view. चलिए, कोई बताएगा कौन शेयर करेगा? अरमान अली, आप शेयर करिए। चलिए, अरमान अली शेयर करिए। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल? अरमान, ओके, लैपटॉप यूज, हाँ, चलिए। सो एक चीज ध्यान, इट इज विजिबल। अरमान, जस्ट आप पहले वो डाउनलोड करना चालू करिए, तब तक मैं दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। अभी अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो भी आप जो भी हमारे प्रैक्टिकल है वो सब कर सकते हो, तो ऐसा दिक्कत नहीं कि आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। जो दोज हु आर यूजिंग मोबाइल फोन, उसको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके ये सर्च करना है, नेम इज 8085 अल्टीमेट। 8085 अल्टीमेट आपको जाके वो प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? और वो एक एज अ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है which is equivalent to the simulator of this one, okay, GNU 8085। तो जिसके पास मोबाइल है वो ये प्ले स्टोर में जाके ये सर्च करके जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट वो आपको इंस्टॉल करना है, और जिसके पास लैपटॉप है तो उसके लिए मैंने ड्राइव की लिंक ऑलरेडी दे दी है। ओके, तो सब लोग ये सॉफ्टवेयर अभी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए, और बताइए अगर कुछ दिक्कत है इंस्टॉलेशन में या कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता दीजिए। चलिए, एट 8085 अगर जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उसको मैं बता देता हूँ। 8085 अल्टीमेट आप सर्च करोगे, सो 8085 अल्टीमेट, तो आपको मिलेगा अभिलाष विश्वास करके, अभिलाष विश्वास 8085 सिम्युलेटर अल्टीमेट, अभिलाष विश्वास का, ठीक है? सो वो आपको इंस्टॉल करना है। इज दैट ओके? कोई भी एक करना है अरमान, दोनों की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल हो गया? यस सर। ओके, सो पहले सब लोगों को ये इंस्टॉल होने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो ये बताइए। चलिए, मोबाइल में भी या लैपटॉप में भी कुछ दिक्कत है तो पहले हम उसकी क्वेरी या डाउट सॉल्व करते हैं। चलिए, सब लोग अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, ओपन करके रखिए अरमान, हम बाद में डिस्कस इसका करते हैं।
सब लोग इंस्टॉल करके मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दीजिए, इंस्टॉल हो गया है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। चलिए क्विकली एवरीवन। Arman has already done. Other students, give me your response whether it is done or not. So Jinali has installed, Bhavin has installed, Udit Raj has installed, Pankaj, Ruti is doing okay. What has done? Not an issue. Mihir install. Okay. Okay. Hardik has also downloading. Not an issue. Other students, बताइए चलिए quickly. What is your status? Khushbu installed. Good one. It's a simple software, not that much of the difficult task. Okay. Seema installed. Okay. Okay. Neha installed. किसी का बाकी है अभी? Okay. Om Prakash installed. Good one. I think सबके लैपटॉप या मोबाइल में ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत अभी हमको नहीं है। चलिए, सो इंस्टॉल करने का प्रोसेस चालू रखिए, अगर नहीं हुआ है तो डाउनलोड करिए, और इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट नीड टू प्रेस नेक्स्ट एंड ऑन, एंड इफ यू आर गोइंग विद द प्ले स्टोर it's simply installed and directly you need to open. Okay, so मैं मोबाइल में भी बताऊंगा like how you can do the experiment on mobile, how you can do the experiment on laptop. So in both I will give the demonstration on that. Okay, so as in our regular lecture, as I have told you, like one student has asked me the question that whether this is a practical based subject or theory based subject. So at that time I have given the answer like that, whatever the a computer organization and the architecture blocks are there. So in the theory, we are going to study those architecture and those different logical blocks. But we are taking one already kind of the available architecture in the market, and which is most of the old one are there, or it's a first we can say that processor that has been developed, okay, for this computation process, which is a 8085. Okay, so there is a 8085 which is a first processor has been developed, and we are going to do our practical on that one. Okay, like how the assembly language is going to be work, what are the basic program are there. Like many times students will ask me like why we are working on such type of the old type of the software and all stuff. So for that I will say yes, it is an old one. First reason, GTU has been suggested, and it's not like that if you are going with this old, so you don't know the advanced version. My point of view over here is like whatever the stuff that you have understand using this 8085, this simulator, that concept is going to be same, like assembly language programming, their basic fundamental, their interrupts, like their number of processing size, their ALU, their by default registers are there, their pipelining, their kind of the data and address kind of the width are there. So concept is going to be same. The matter is going to be changed like that when you are jumping from this 8085 to latest one. So what it will change, it will change the little bit of instructions. Like it is possible that like using this 8085 some of the computation not possible, but you are going with the higher end of the processor, so that computation possible. But it's not like that complete architecture, complete assembly language has been changed. No, there are some addition and modification in that assembly language, but concept and stuff and process are going to be same in that particular advanced version of the processor. So we will start with the very basic one, like what is the basic fundamental of this 8085 processor and how that program is going to be executed and all stuff. Okay, so what we are going to do in a laboratory, the task is going to be done using this particular software. Okay, तो चलिए अरमान वो जाइए वो स्क्रीन पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं. चलिए, so you can see in the first look there are a middle, there are a programming kind of the code window is there. Okay, you can say like in middle one, there's from the program title and from the whole you can write the different assembly language program over here. Okay, right hand side there is a data is there, stack is there, keypad is there, memory, IO port is going to be there. Okay, so if you can just click on one by one, like go to click on stack in right hand side, click on stack.
right hand side window, stack. So stack, it will give you kind of the values, like how your data is going to be arranged and what are the data is going to be executed and all stuff. Go to the keypad. Keypad is this a different assembly language instruction are there. Okay, so there are so much instructions are there. If you just hold to anyone, it will give you some of the idea, like see, add implement to accumulator with carry, logical and operation. So there are a different instruction are there, okay, that actually you can use to do the different processes. So that directly you can use, and that you can include, like sometime if you have forgot that which stuff I need to do, so you can take the help of from this directly from keypad. Okay, next go to the memory. So memory, it will tell you that like there are a 4 hexa bit of the address, you can say. Okay, so everybody need to give me the answer, like if I am having a 4 hexa digit, then can you tell me how many memory locations are there in this particular processor? See, this is a 0000. Arman, go to down 00. Go to the down. Okay, what is the last number we have? Go to down. Last number is 03E7 we have. Can you tell me by calculating that from 0000 to 03E7? Can you tell me how many numbers or how many address locations are there? Yes, that's 999 already mentioned over there. Okay, so you can say, you can consider it at this also, but you can say like that, if you are having a address bit is 0000, and you can say your maximum value of hexa digit is going to be FFFF. So can you tell me how many address location is available through that processor? If the starting location is 4 times 0 and ending location is 4 times F. Somebody calculate and tell me the answer on that one. I'm not talking about right now about that same, but I'm talking about in general, like if I'm having a 4 times 0 and end location is 4 times F, can you tell me how many address locations is going to be possible with this address kind of the change? For this, you can simply enter Arman. You can see in a left hand side there is a decimal hex conversion is there. See, so in hex put in the hex, and in the hex side put FFFF. No, not in decimal, man. In hex, decimal don't have the FF. Put FFFF and click on to DEC. Have you seen there is a 65,535? So we can say if you are having a starting memory is 0000 and your ending memory is FFFF. So for that particular address location, you have a 65,535 locations are there, which is nothing but it's going to be 2 raised to 16. Okay, 2 raised to 16. Okay, because there are a 16 digit of the binary digit are possible to vary from this 0000 to FFFF. Have you understood this one or not? आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? लाइक अगर मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस 4 टाइम 0 है, एंडिंग एड्रेस मेरे पास 4 टाइम F है, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरे पास 65,535 एड्रेस लोकेशन हो गए जहां पे मैं अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता हूं. कैन यू टेल मी 65,535 इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी किलोबाइट or how many megabyte or how many gigabyte? Like your memory always that you are talking about in which term? KB, MB, GB, TB. Can you tell me 65,535 equivalent to how much KB? Chaliye, there's a trick question.
Everybody getting my question or not? Hello? Please, yes or no? Abhishek Tiwari has joined now. Abhishek? No, man, it's not going to be work, huh? Abhishek? यस सर क्यों ज्वाइन हुए अभी? अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा 5 मिनट में. Why you are late? अभिषेक सर थोड़ा इमरजेंसी था वर्क से चले गए थे. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से आइएगा. अभी जो करवाया है इसका रिकॉर्डिंग होगा आपके गूगल कैलेंडर में, तो देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या करना है एंड ऑल दिस स्टफ. ओके, समझ गए आप? नेक्स्ट टाइम बी रेडी विद दैट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर. ओके अभिषेक, सब इंटरनेट सब चेक करके रखिएगा पहले से. ओके अभिषेक? ओके सर. चलिए ठीक है. सो नो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड. हार्दिक, मैं ये कहता हूं कि आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास 65,535 डेसिमल, आप ये भी कह सकते हो लाइक यू हैव 65,535 बीट्स आर देयर. सो व्हाट इज द मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टफ? सो कुछ लोगों ने लिखा 64K, 64,000 KB. Your answer is going to be wrong. No, this is not an answer, man. Okay, if I'll go with that, let me go to the Google. अरमान, ये एक चीज है वो डिस्कस करने की बहुत जरूरत है. Go to Google and search that 1 KB equal to how many beats? Beats लिखे. 1 KB equal to how many beats? Beats लिखे, bytes लिखे. Why 8,000? No, man. Multiply digital storage value. Beats. Oh, no. Sir, Okay. Got it. What they are writing, they are multiplying with the 8. Click the beats only. Click the byte. Byte. It's showing the 1,000 byte. Okay, so they are just directly multiplying. Google is also saying like that this is a stuff. Can you, in terms of digital storage, can you change it the other stuff? Digital storage में क्या दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेम रखिए, बीट ही रखिए. डिजिटल स्टोरेज देखिए, डिजिटल स्टोरेज ऊपर है सबसे ऊपर दिखिए 1 के ऊपर. It is also not going to be there. Okay. Leave it. Okay. If I'll tell you simple, if I can say, whenever you are purchasing a 1 GB of the, or let's take, if you have purchased a 1 TB of the hard disk, okay, in 1 TB of the hard disk, there are not always like it's a 1,000 GB. If you have observed any time, so अगर आप कोई आपका अगर कोई पीसी भी परचेस करने जाते हो या अपना लैपटॉप परचेस करते हो, अगर उसमें लिखा है उसमें 500 GB का स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, तो आपको 500 GB दिखेगा, बट एक्चुअली विच इज नॉट अ 500 GB डायरेक्टली. कभी आपने अगर पेन ड्राइव परचेस किया है, पेन ड्राइव में ऐसा लिखा है दिस इज अ 16 GB पेन ड्राइव. ओके, तो जब आप वो जीबी का, बाइट का, जब आप एक्चुअल बीट में कन्वर्ट करते हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज अ मल्टीप्लाई बाइट ऑफ दैट वन. 1 GB मतलब 1000 MB नहीं होता. ओके, for that there is a simple example is going to be there, like what is a memory actually going to be available in KB. So when the KB will came, like if you will go with the 2 raised to power, like 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, so it's going to be like 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 and 1024. Okay, other students has been also joined. Pooja, have you joined now? भाविक, पूजा एंड भाविक, क्यों अभी ज्वाइन हुए? हेलो, पूजा एंड भाविक, open your mic and tell me why you have joined now.
बताइए। हेलो, I have joined, but because he left. Hello, हाँ बोलिए, sir. हाँ बोलिए। टाइप योर रीजन इन चैट बॉक्स। भाविक, टाइप योर रीजन इन चैट बॉक्स। अभी ज्वाइन हुए आप? ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, Sir, बट because लाइक अभी ध्यान रखिए, फर्स्ट लेव है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन इश्यू कुछ भी है तो थोड़ा पहले से सेटअप करके चेक करके बाद में बैठिए, ठीक है? सो इतना 20-20 40-40 मिनट लेट नहीं चलेगा। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस स्टफ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड। मेरा कुछ इसमें नहीं जाएगा, अगर आप लास्ट 5 मिनट में ज्वाइन होते हो, अटेंडेंस देके चले जाते हो जाएगा, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो चीज है वो आप मिस करोगे। मेरा उसमें कुछ नहीं देता, मेरा सैलरी मिलता ही रहेगा। यू विल लॉस्ट, ओके, वट एवर दिस स्टफ इज देयर। सो नेक्स्ट टाइम जो भी लेट आ रहा है मैं उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जो भी चीज है वो आप पहले से ज्वाइन करिए। आप जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, इसका वीडियो लेक्चर देखिए, रिकॉर्डिंग आपके कैलेंडर में मिल जाएगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद। तो कैनवास ज्वाइन होने का और ये सॉफ्टवेयर के लिए मैंने दोनों प्रोसेस समझाए हैं, आप उसमें से देख के अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। And your canvas also need to be set up. So ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, okay? Okay. So what is the stuff we have? Like I can say, like whenever we are going with a 2⁻10 power. So 2⁻10 power in digital also, you know that 2⁻10 power is equal to 1024. So that 1024 consider as a 1 kb. Okay. Likewise, if you are increasing with 2⁻11, 2⁻12, 2⁻13, 2⁻14. So it is going to be like, if you are increasing from 2⁻10 to 2⁻11, so it's going to be 1 kb to 2 kb. Then it is going to be a 4 kb, then 8 kb, 16, 32, 64, 128, 256, 512, and then it's a 2⁻20 equal to 1024 kb, which is equivalent to 1 MB. Okay. So 1024 kb equivalent to 1 MB. And after that MB, what is the stuff we have? MB after we have the okay, can you tell me GB, like sir. GB? Yeah, so we can say 1024 MB equal to the 1 GB. And 1024 GB is going to be a 1 TB. So whenever you will see that, like whenever you purchasing any pen drive, like you have हाँ, whenever you purchase 1 TB, तो आप देखिएगा उसमें एक्चुअली 1024 GB नहीं होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि 100 GB 1 GB को करने के लिए like they are not directly give you the stuff like 1024 MB, और 1 TB के लिए 1024 GB नहीं देते, वो 1 GB देते हैं equivalent to near about 900 GB or 950 GB, such amount of the data they will given. Okay, so this is going to be happen whenever you are considering that how many memory, with respect to that how many bit is going to be combined. Okay, so फिर से जाइए हमारे जो simulations थे उसमें। So यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, so it's having kind of the 65 535, and you can say one to represent the 1F you require the 4 binary digit. तो हमारा hex कितना है? 4 है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 चाहिए, ठीक है? तो 4 को करने के लिए 16 चाहिए. So we can say there are 2⁻16 locations are there. So if we can say there are 2⁻16s are there, so how many KB now? Tell me. 2⁻16, 16. 2⁻16. So 1, 2, 4, 8, 32, and 64. Is that okay? So it's going to be 2⁻16. It's going to be a 64 KB you can say. So now you got the idea. 64 KB equivalent to 65,535 decimal numbers are there. Okay, so this is a kind of the relationship between KB and actually the amount of decimal number related to that. So we can say if we are having the starting address and ending address of your location, so you can find out how much memory going to be accommodated with. ये रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, आपके पास इतने मेमोरी लोकेशन है तो बताइए कितने बाइट का
आपको एड्रेस ड्राइव बनाना पड़ेगा, कितना उसका width होगा. Likewise you can identify. Another stuff we can see in the left hand side, there are a register are there, flags are there. Okay, and in the register and the flag, register which is made up of the 2 digit, like all the number is mentioned over here is a hex digit, so there is a 2 digit. So 2 digit का यहाँ पे 00 सब जगह पे दिया हुआ है, like BC, so B separately 00, C separately 00. Okay, उसके सामने जो दिया हुआ है वो like BC, DEHL, PSW, PC. So that's a 2 bit of the register are there. So we can say there is a 2 digits are there, and each digit is a hex. So can anybody tell me how many bit of the microprocessor this is? There is a 2 digit of hex is there. Can you tell me how many digit of this particular processor contain? Okay, Pooja, if you have installed everything, okay, not an issue. बताइए, चलिए. So अरमान अली भी कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे. आपके पास 2 हेक्स डिजिट है, उसके ऊपर से आप पता कर सकते हैं कितने बीट का प्रोसेसर होगा ये. $256, sir. No man, it's going to be a 4 plus 4, it's going to be a 8 bit processor, क्योंकि 2 डिजिट है हेक्स के, तो एक हेक्स डिजिट 4 बाइनरी बीट रिप्रेजेंट करता है. आपके पास 2 हेक्सा बीट है, तो आप क्या कह सकते हो, इट इज 8 बीट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज देयर. इसका मतलब साइमल्टेनियसली इट कैन डू द एरिथमेटिक, लॉजिकल, ऑल द ऑपरेशन विद द 8 बीट ऑफ द ऑपरेशंस आर देयर. तो अगर आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, जो भी आपने एडर बनाया है, सबट्रैक्टर बनाया है, शिफ्टर बनाया है, एंड और नोर जो भी होता है वो कितने बीट का होगा, 8 बीट साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो जो भी 8085 प्रोसेसर है उसमें एडर होगा वो 8 बीट का एडर होगा, 8 बीट का सबट्रैक्टर होगा, 8 बीट का मल्टीप्लायर होगा, डिवीजर, ऑल द स्टफ इज गोइंग टू बी प्रोसेस विद द 8 बीट. ठीक है, तो आपको 1 बीट का एडर बनाना आता है, तो ऐसे आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 8 बीट के 8 एडर्स रखने पड़ेंगे इन काइंड ऑफ द पैरेलल. सो द 1 एडर ब्लॉक ऑफ दिस 8085 विल बी फॉर्म. ओके, दिस इज अ स्टफ इज गोइंग टू बी देयर. समझ में आ रहा है सबको? इज इट यस और नो? प्लीज एट योर रिस्पॉन्स, यस और नो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स अ 8 बीट प्रोसेसर, सो साइमल्टेनियसली इट कैन डू द. उदित राज, यू डोंट नो. उदित राज, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि ये जो आपके पास 2 हेक्स बीट है, ठीक है, एक हेक्स बीट आपको 4 बीट में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप. पहले आपको ये पता है कि f इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी बीट्स? उदित राज ये बताइए मुझे. उदित, यू ओपन योर माइक एंड टेल मी. उदित. अदर स्टूडेंट्स आल्सो रिस्पॉन्स, यस और नो? आपको समझ में? हाँ, आप ये मुझे ये बताइए, जस्ट टेल मी, if I am having a f in hexadecimal, how many what is the binary of that f? वो hex को binary में convert करिए. चलिए, आपने last semester में पढ़ा होगा. If you have a f in a hexadecimal, what is the binary of that? 1111, sir. Yeah, so it's a 4 times 1. अगर मेरे पास f है तो उसका binary क्या होगा? Sir, मतलब अगर मेरे पास f in hexa, what is the binary of that? सर उसका बाइनरी निकालना पड़ेगा. निकालिए, चलिए. FF का बाइनरी क्या होता है? तो 10 से 11 दूसरा लेक्चर है आपका. अभी मैं ऑलरेडी खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा भी लेक्चर है. चलिए बताइए. 8 बिट होगा ना? सही है ना? एक FF के लिए 4 बार 11, तो 2 FF के लिए 8 बार 11. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो भी ये प्रोसेसर है, यहाँ पे 2 हेक्सा डिजिट है, तो मतलब कि वो एक साथ 8 बाइनरी डिजिट को प्रोसेस कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 8 बिट प्रोसेसर. इट मींस अगर आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, जो भी प्रोसेस करते हो ये प्रोसेसर से, तो वो एक साथ
8 बीट को प्रोसेस करेगा। तो 8 बीट को प्रोसेस करने के लिए आपको 8 बीट का एडर चाहिए, 8 बीट का सब्ट्रैक्टर चाहिए टू एड द नंबर, टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, टू मल्टीप्लाई द नंबर। सो whatever the block it contain inside of this processor which is designed for 8 बीट ऑपरेशन, वो 8 बीट को ऑपरेशन करने के लिए ये प्रोसेसर डिजाइन किया गया है। That's what I'm saying. Is it okay? Udit? Yes, sir. Okay, so this is the overall stuff we have, and that much of the things that we need to discuss on this lab, not more than that. तो सोचिए अगर ये जो प्रोसेसर है आपका 8 बीट का है और अभी मैं और आप दोनों जो मोबाइल जो लैपटॉप में से ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, it is a 64 bit processor. Imagine 64 bits, so it's 8 times larger than the processor that we are working right now. So it's our processor, our system can operate simultaneously a 64-bit addition, 64-bit multiplication. That's why data rate and all stuff is going to be higher, while this processor is having a data rate and all stuff going to be lower. Okay, so what we are going to do now, like this is all stuff we have. If your canvas has been not set up, please set up the canvas as soon as possible and उसको arrange कर लीजिए। उसमें experiment 1 है, आप सिर्फ देखिए, हो सकता है तो करिए, अदरवाइज फिर से जब हम नेक्स्ट लैब में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैनवास में से क्या करना है। सो इफ यू गो विद द डैशबोर्ड एंड इफ यू गो विद द कोर्स, ओके, इफ यू गो विद द डैशबोर्ड और कोर्स, आपको पता चलेगा कि COA में आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी वहां पे है। एक्सपेरिमेंट 1 वर्किंग ऑन 8085 सिमुलेटर GNU SIM 8085। तो मैं नेक्स्ट लैब में आपको बताऊंगा कि मोबाइल में भी कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करना है, एंड ऑल दिस स्टफ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट लैब। तो फिलहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लीजिए, उसमें क्या करना है। उसमें सिंपली ये GNU SIM 8085 कैसे काम करता है उसका लिंक दिया गया है। सो उसके पास एक लिंक है, लाइक आप उसको डाउन जाइए, डाउन इट्स बीन डेवलप इन 1977। सो आप उसको डाउन जाके वहां पे एक लिंक दिया गया होगा, लाइक 8085 वर्किंग फ्रॉम यस इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। तो ये लिंक में जाके उसका समरी लिखना है कि भाई क्या आपने पढ़ा ये आर्टिकल में से और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये किस तरह से काम करता होगा, वो उसके नीचे लिखना है। और एट द एंड देयर आर 8085 आर्किटेक्चर इज देयर, सो यू नीड टू जस्ट सी द आर्किटेक्चर ऑफ 8085, और वो सब चीज हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे। Anybody having any doubt, any question in this laboratory, then please ask. Otherwise, please write your enrollment number and you can leave and you can join the next lecture. और हमारा जो भी कैनवास, जो भी हमारा सबमिशन होगा, कुछ भी होगा, सब कैनवास में से ही होगा। सो एवरीबॉडी नीड टू सेट अप देयर कैनवास एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, हमारा सब चीजें, सब सेटअप, सब काइंड ऑफ द सबमिशन मार्किंग सब कैनवास में से ही होने वाला है। सो जस्ट डू दैट। ऑब्वियसली ना मैन, 64 बिट बेस्ट नहीं होगा, आपका सब चीजें डबल हो जाता है ना, प्रोसेसिंग एंड ऑल स्टफ। Who is the better? Like, who is the better, 8 bit or 64 bit? Obviously 64 bit. Why? That processing speed and other technology going to be increased twice. जहां पे आप एक प्रोसेस करने के लिए आपको 4 मिनट लगता था, वो 2 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हायर स्पीड इज देयर, साइमल्टेनियसली डबल डेटा गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। ऑब्वियसली 64 बिट प्रोसेसर, लेकिन अभी 64 बीट से हम ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, लाइक 128 बीट अभी नहीं हुआ। वी आर ऑल वर्किंग ऑन 64 बीट एंड पीपल आर वर्किंग ऑन क्यों इसलिए मैं बता, क्योंकि दैट whatever the number of beats are there, okay, which is going to be that process with the 64 bit. First of all, 64 bit में से जो भी प्रोसेस हो रहा है which is going to be enough for the computation, but उसके लिए जो डेटा ट्रांसफर चाहिए from स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, लाइक मैं ऐसा बताऊं कि ये जो चिप है उससे दूसरे चिप में जो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, वो अगर मैं 64 बीट से 128 बीट करता हूं तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक लेवल से आप उसको ज्यादा बढ़ाने से आपका जो पूरा पाइपलाइन है वो सब चीजें वो बड़ा करना पड़ेगा, एंड इट विल कंज्यूम काइंड ऑफ द मोर एंड मोर स्टफ rather देन उसको बढ़ाने की जगह पे जो उसका कम्युनिकेशन का स्पीड है वो आप चेंज करो। ठीक है, ऐसा हुआ कि भाई यहाँ तक
इतना भी अब ऐसा मैं करूं कि 8 बीट के लिए जितनी जगह चाहिए होगी, ऑब्वियसली 16 के लिए, 32 के लिए, 16 बीट के लिए ज्यादा चाहिए थी। ओके, अभी आप 128 कर रहे हो, तो वो जो आप एएलयू में एडर बना रहे हो उसका डबल साइज का बनाना पड़ेगा। So it will consume a more space, okay, rather than the first one. वो more space होगा तो जो आपके अभी तक जो ICs और सब कुछ है, it's going to be expand, क्योंकि 128 बीट करने के लिए आपको डेटा भी 128 बीट का बनाना पड़ेगा, सब चीजें आपको बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। Now there is a trade off between their other technology which is give the promising stuff, आप 64 बीट का ही प्रोसेसर यूज करो, लेकिन अगर आप ये ट्रांजिस्टर की जगह पे ये ट्रांजिस्टर यूज करते हो तो वो प्रोसेसिंग आपको डबल कर देगा। So why I need to go with kind of the designing a new 128 bit architecture? मैं 64 बीट में ही रह के उसमें ट्रांजिस्टर चेंज करके डबल स्पीड करूं, तो why I need to go with that with the other one? That's why this stuff is going to be limited to 64, and now people are working on what is a new technology of fabricating the higher speed of processor. That's over here. आपने अगर कभी पढ़ा है, I will show you also. There are a Xeon processor is there. Xeon processor के साथ अब मेरा ये पीसी मेरे पास से i7 है, it's a 6th generation i7 is there. उसमें जो मैं एक टास्क करता हूँ उसको करने के लिए उसको approximately 1 hour it will take, कुछ high performance task है, रेंडरिंग और वीडियो ग्राफिकिंग रिलेटेड, सो इट विल टेक a 1 hour. लेकिन जो Xeon प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, that 1 hour task is going to be complete in just 5 to 10 minutes. So there is a 6 times faster than the actual i7 processor. ऐसे Xeon processor इससे भी faster है, like उसके साथ आप 128 TB 256 TB तक का हार्ड डिस्क आप अटैच कर सकते हो, आप उसके साथ 64 GB का ग्राफिक्स कार्ड अटैच कर सकते हो। So people are developing on that horizon, okay, like majority data storage and major amount of the speed they will take, so they will not process on hiring the speed, that's why, okay, it's amazing. So I will show you some of this stuff. और ऐसी सिस्टम जो सुपर कंप्यूटर की बात आपने शायद मारवाड़ी में सुना होगा, तो related to such high speed system already there in our campus. मैं भी एक सिस्टम यूज कर रहा हूँ, वो अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख का पीसी है, जिसमें ये सब प्रोसेसर 3 लाख रुपए, ओके, एक सीपीयू के लिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ इन आवर पीएचडी एंड ऑल स्टफ। ओके, सो we'll discuss this all stuff in a later on, and don't worry, we will just discuss on this other topic also. So right now everybody, if you have written the answers, so then you can leave and you can join the next lecture. Thank you very much everyone. क्वांटम कंप्यूटर हम डिस्कस करके उसके बारे में भी उदित राज, डोंट वरी, हम क्वांटम कंप्यूटर्स का भी देखेंगे, डोंट वरी। चलिए उसका भी कुछ मैं प्रेजेंटेशन बना के आपको देता हूँ। दिस इज द क्वांटम कंप्यूटर्स, श्योर।